करो मैं। ओके सौशिक, यू कैन कंप्लीट। आप क्या पॉइंट रेज कर रहे थे यहाँ पे? Basically, I was saying, Mansi, that local people, that is Baluchi people, were demanding the right for equitable and benefit sharing, which they were not getting under the project. पहला ये हो गया. The second was the corruption, high issue of corruption and cost overrun. ये दो इशू है जिसके कारण ये ठप हो गया प्रोजेक्ट. सो ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो वी आर नॉट सीइंग कि चाइना एक डेमोक्रेटिक एक फेडरल तरीके से फंक्शन कर रहा है. इट इज नॉट कोऑपरेटिंग. वहां पे भी चाइना की असर्टिवनेस एंड मोर चांसेस ऑफ मिस यूजिंग चाइनाज डेड डिप्लोमेसी दैट इज बीइंग विटनेस. तो उसकी वजह से वी आर ऑल्सो सीइंग कि बहुत सारी कंट्रीज विदड्रॉ भी कर रही हैं. प्लस ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. So making it successful, it is like really challenging given how China has been behaving or trying to implement it. So China इसको forcefully करना चाह रहा है. So it is very difficult to implement this in this manner. So China needs to shift to basically how democratic तरीके से, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ही हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं. इसमें एक पॉइंट और रेज करना चाहूंगा मानसी, कि इसमें जो चाइना ने जितने भी एलाई लिए हैं ना, उनमें कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला सिर्फ चाइना. तो इसके फेल होने का एक रीजन ये भी है कि जो इसके सहयोगी पार्टनर्स हैं उनमें से ज्यादातर कंट्री जैसे जिनको चाइना कोई पैसा देके डेब्ट डिप्लोमेसी प्ले करनी पड़ रही, कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने वाली कंट्री नहीं है इसके अलावा. तो बेसिकली कैपिटल का है कि सिर्फ या तो खुद के पास बहुत ज्यादा, वरना फिर ऐसे एलाई लेने चाहिए थे जो इसके साथ कैपिटल इन्वेस्ट कर दे. ठीक है. ओके सो आंचल, आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो ऑल्टरनेटिव्स क्या हमने अनाउंस किए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए? इसमें इंडो पैसिफिक रीजन एक बड़ा रोल प्ले करेगा अपार्ट फ्रॉम दिस. ऑल्टरनेटिव्स क्या है? और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑल्टरनेटिव्स क्या लॉन्च करे हैं? दिया, करुणा. शिवांक, anyone can answer. Please be quick. So I'll write the name. बोलो इंडियन दिव्या. मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ट्रेड कॉरिडोर, IMEC इकोनॉमिक दिव्या, कॉरिडोर एंड IPGII. और फिर अभी लोग बात करते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट IPFC, IPC का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक. North and South Transport Corridor. Then we have हाँ, Indo, US, Japan, and Australia Corridor initiative. So these are two recently launched, and apart from that, the OCT has raised one more. India uses Chabahar port as an alternative to Gwadar port to connect Iran to Azerbaijan and directly to Russia and European Union through international North and South corridor, as Professor mentioned. सो वी आर फोकसिंग अपॉन प्राइवेट सेक्टर का रोल और कितना ज्यादा हम इंक्रीज कर सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन एरोस्पेस सेक्टर. So Tata Motors promoted the Tata Technologies Limited is leveraging the automotive experience to serve the clients in adjacent verticals like aerospace, where it sees large opportunities. So aerospace, we're seeing it leverage deep automotive domain knowledge in manufacturing tools to enter the aerospace MRO sector. Then generative AI is no threat to jobs, says the SAP Labs. So generative artificial intelligence, Karuna, can you explain the meaning? मानसी, जनरेटिव अगर Basically आसान भाषा में using समझना जाए तो text and images. Basically, we are using text and images, and we are training that model to create
the desired outcome, for example, videos or any animated scene that can be depicted in an image. ठीक है, मतलब वो जनरेट करने में हेल्प करते हैं, चाहे ऑडियोज हो वीडियोज हो, यू जस्ट हैव टू टाइप व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर यू वांट, सो इट जनरेट्स दैट पिक्चर फॉर यू. So simple language में that is the meaning. Former Reserve Bank of India's Governor S. Venkit Ramanan passes away at 92. So his contribution is very important. He passed away at a private hospital. So we talk about. So India at a critical time when the country faced most severe balance of payment problem. मतलब during 1991, he recalled C. Rangarajan, who served as the RBI as a deputy governor during the Venkit Ramanan's time. So he basically was the RBI governor during the structural reforms in India. That is talking about the decades of 1990s, and quick changes were done. So definitely the cooperation and coordination and taking important policy decisions at that point of time was very important for India. He played a leadership role in the crisis times. And so we are also seeing कि यहाँ पे भी we're seeing different time periods के दौरान cooperation between even the former RBI governors also, like Y.V. Reddy sir, he was also RBI governor, and he also served as finance secretary. So he's also known for his humane manner. So how as a leader you present yourself, or basically how sensitive you are, how humble you are. So he's known for his humane manner as well. Okay, Ashik, we can take up the Indian Express now. Okay, Mansi. Now coming to the Indian Express, our CGI Chandrachud ji has said that students reject constitutional morality, says CGI. So what is constitutional morality? It is the values and ethos that has been prescribed by the Indian Constitution, and the judgment needs to be interpreted according to that. Mansi, you can add if you want to. नहीं ठीक है, आपने इन शॉर्ट में बता दिया. Universally added होता है and modified them to suit the Indian condition. कहीं से भी अगर जुडिशन हुआ है कोई भी कंट्री में भी तो डायरेक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, हमें उसको मॉडिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंडीशन. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. Recall of military staff Maldives president tells Indian government, we have discussed this, how the Chinese influence is increasing in the Maldives and इंडिया को क्या करना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू मी इंडिया के पास 3 to 4 स्टेप्स है. फर्स्ट इज more and more developmental and economic aid with condition to Maldives. Second would be people to people contact with Maldives. For example, building a university or talking about the global south and loss and damage for Maldives and their people. Third would be help in the defense cooperation. Fourth is, I think, psychological influencing of the elites in Maldives or even the people of Maldives. ये कर सकते हैं, तभी जाके प्रो चाइना जो बायस है वो खत्म हो सकता है. You can add if you want. See, neighborhood first policy में Maldives is very important for India. So India Yes. again, जो changes होते हैं, we are not having a kind of a rigid approach or strategy against any neighborhood. So even if China is trying to increase its influence, investment कर रहा है अगर China, तो still India sees we still have a kind of a looking it as from a positive lens. मतलब UP government bans halal certified product in state, export only exception. तो जो halal certified product है, it is banned across the state.
The ban covers production, storage, and distribution sales of halal certified food product, except those meant for export. Export only to the Middle East और बाकी से कंट्रीज जहाँ पर halal सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो कोई इसमें बोलता आता है कि the company is certifying the product as halal in order to increase the sale among the community, and the product practice is like toying with the public faith. तो इसमें क्या करना है किसी को? This is I would just say कि this is an unethical practice, and again people's faith and their beliefs are being basically violated over here. अनएथिकल प्रैक्टिस मतलब हलाल इज अनएथिकल प्रैक्टिस और द गवर्नमेंट हैज जो अभी प्राइवेट प्लेयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ मतलब कि इलीगल तरीके से दे आर डूइंग दिस थिंग। हलाल हलाल वाज बेसिकली दे रहे ओनली हैं। फॉर द मीट कि वो सर्टिफाई करना है कि उसमें पोर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन हर जगह आ गया हलाल फूड, हलाल हाउसिंग, हलाल वेजिटेरियन प्रोडक्ट सब में आ गया, क्योंकि इसको एक सर्टिफिकेशन एक स्कीम है इसके अंदर में जो सर्टिफाई करता है इसको, तो एक बड़ा बेसिकली सिस्टम क्वेश्चन इसलिए। उसी मेरा क्वेश्चन था, बेसिकली पता कैसे चलेगा ये चीज हलाल है, मतलब क्या मायने, क्या गाइडलाइंस है, या फिर So क्या है? rather than using religious institution for certifying halal or not, I think according to me, national government should have a certain mechanism under the FSSAI. Its FSSAI mandates the companies to indicate whether the food product is veg or non-veg. Just like that, the company must do कि ये नॉन पोर्क ऐसे कर बस। तो इसमें क्या होता है, अभी क्या है कि सर्टिफिकेट इशू होता है थ्रू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो ये डिफरेंट है दोनों में। तो या वो अभी सरकार रिलीजियस को ही करना चाहिए इंस्टीट्यूशन या तो एफएसएसआई को करना चाहिए डायरेक्टली। एफएसएसआई मैंडेट कर दे कंपनी को, डायरेक्टली बता दो कि इसके अंदर में ये पोर्क है कि नहीं, खत्म हो गया बात। रिलीजियस का एंगल ही नहीं होना चाहिए ओवरऑल इसमें, अकॉर्डिंग टू मी। Detaining government critics abuse of preventive law. The preventive law is under Article 22 of the Indian Constitution, and UOPA also talks about the preventive detention. And प्रवेश इसमें आप बताओ कि जो प्रिवेंटिव लॉ है इसमें बात की है कि हाई कोर्ट हैव क्वॉश द कश्मीर जर्नलिस्ट डिटेंशन। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि सेडिशन होता है या फिर आप सरकार के खिलाफ बात करते हो, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एंटी इंडिया हो या एंटी स्टेट हो या फिर वॉर अगेंस्ट द स्टेट हो। उसका अपना फंडामेंटल आपका राइट है कि आप कुछ आप बोल सकते हो, अनटिल अनलेस देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि आप इंसाइट करो मॉब को या साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको खराब करो। तो ये अकॉर्डिंग टू मी आई So होता भी again, ऐसा। I will say the same thing that the preventive law is used under the UAPA today to ensure that the law and order problem do not uh, get degraded, and the administration works properly. There is no interference by anyone in the course of justice. So that is the main crux of preventive detention. If the administration takes someone in the preventive detention, and as far as the criticism of government is done, so there is no provision in the preventive law precedents that criticism of the government will amount to preventive detention. The preventive detention only will happen on 3 to 4 criteria where you are becoming a threat for the country, for the national sovereignty, for the international relations, and for the law and order problem. So these 3 or 4 are the principles on which the preventive detention law is applied under the UAPA. And obviously, if the journalist who has been detained by the administration, if he will be fined by the executive magistrate as non categorized under those provisions, will be released. तो यहाँ पे सुप्रीम मैं बता प्रभु क्लियरली बोला है जजमेंट में कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन, सो दिस थिंग नीड्स टू बी मेड क्लियर बिकॉज यहाँ पे हमें लेकिन इसमें जो बात हुआ है, इसमें जो सजद गोल वो अरेस्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फॉर पोस्टिंग अ वीडियो ऑफ स्लेन मिलिटेंट फैमिली रेजिंग एंटी इंडिया स्लोगन। मैंने सुना। तो सो अगर मिलिटेंट को आप अगर फॉलोएंगे तो हो सकता है कि आपको डिटेन किया जाए, देन कि इट हो सकता है कनेक्शन हो। कैन और एक और इसमें देन बात करना है प्रवेश कि व्हाट आर देन द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 22, अगर आप ब्रीफ में बताओ तो। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का दिया हुआ।
So Article 22 talks about two types of detention. First is a punitive detention and second is a preventive detention. Punitive detention वो होता है जहां पर आपको एक गलत काम करते हो उसके बाद आपको पुलिस पकड़ के जेल में डालती है. प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि अगर पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को शक है कि आप इस तरीके की कोई गतिविधि करेंगे जिससे सामाजिक न्याय में गतिविधि आएगी, सामाजिक असहाय बढ़ेगा, कानून को परेशानी होगी, तो वो आपको पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं और आपको रखते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए अंडर दी जुडिशियल परमिशन. मतलब आपको जो है जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा जाता है, ना कि पुलिस कस्टडी के अंदर. और जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी का मैंने बताया था, टाइमलाइन भी होता है. और जुडिशियल कस्टडी में आपको एक वकील प्रोवाइड होता है जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है. पुलिस कस्टडी में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो जुडिशियल कस्टडी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिसके अंदर आपको फुल प्रोविजंस होते हैं, आपकी सेफ्टी भी इंश्योर की जाती है, आपका रहना खाना पीना सब सुविधाएं होती हैं आपको. लेकिन आप कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो, तो वो आपको प्रिवेंटिव कर लेते हैं, यानी आपको बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए. Okay. And this question has been already asked in the prelims regarding the judicial custody and police custody. तो Yes. प्रवेश यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या राइट्स होती है जो पर्सन को डिटेन करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर आपको डीएम जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके सामने प्रेजेंट करना होता है. नहीं, वो जो आप मानसी जो आप लेते हो, मतलब जब आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लेते हो, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन जब आपने की है तो मजिस्ट्रेट को तो बताना ही पड़ेगा विद इन 24 आवर्स कि हमने इसको पकड़ रखा है. और वो फिर 1 महीने के अंदर एक बेंच बैठेगी और वो बेंच बताएगी कि इस आदमी का प्रिवेंटिव डिटेंशन आगे बढ़ाना है या इसको छोड़ना है. इसलिए तो उसमें 1 मंथ का हाईकोर्ट ने टाइम किया पीरियड. यहाँ पर. क्या बोल रहे हो शिव? हाईकोर्ट ने इसी में इसलिए कॉशेस द कश्मीर जर्नलिस्ट डिटेंशन बेंच बैठा होगा. हाँ, तो बेंच बैठता है इसमें. तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करके रख सकते हैं? मैक्सिमम तो ये होता है कि आप मतलब मिनिमम आप रख सकते हो एक पहली मतलब बेंच के बैठने से पहले आप 1 महीना मैक्सिमम रख सकते हो. और उसके बाद बेंच जितना बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकता है. आपको 2 साल 3 साल पता नहीं कितने भी रख सकते हो आप प्रिवेंटिव में. तो अच्छा ठीक है. Okay, coming to the next article, to bring down unsafe towers, gentle turns to form that demolish super tech buildings. देखा गया है सामने की 4 बालकनी it has collapsed in tower number D, no casualty reported. This showcases the nexus of corruption or substandard material that are being used in the real estate. इसको कैसे किया जाए? तो एक तो है कि engaging service of CSIR जो पता है, और CBRI वैसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है. इनके बीच में एक ऑडिटिंग होना चाहिए. और ऑडिटिंग यहाँ तो टावर का बात हो रहा है जब हो चुका तब, लेकिन पहले ही ऑडिटिंग होना चाहिए कि आपका टावर एक थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होना चाहिए जो भी रियल एस्टेट डेवलपर को उसके द्वारा कि आप प्रूव कर दे कि आप एक तरह से एफिडेविट दे दे कि आपका बिल्डिंग सही है, सही मटेरियल यूज हुआ है, जो ऐसा होता नहीं है जनरली. और इसमें औषिक हम थोड़ा ये भी कर सकते हैं कि जो रेरा की गाइडलाइंस होती हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो भी हम एक थर्ड पार्टी एफिडेविट इनसे मंगवा सकते हैं कि आप हमें क्वालिटी कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट ला के दो कि आपका जो कंक्रीट और जितने भी आपके सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हैं नहीं. हाँ, कल जो बात किए थे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दे हैव पब्लिश्ड सिटीजन चार्टर. मैंने बताया था सिटीजन चार्टर है क्या. वो इट इज बेसिकली द डायरेक्शन गिवन टू द सिटीजन एंड फॉर द अवेयरनेस फॉर ग्रीवांसेस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड आल्सो. तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए था. तो औशिक सिटीजन चार्टर तो क्या एक लीगली ट्रांसपेरेंट. इन्फोर्सेबल है? इज इट लीगली इन्फोर्सेबल? नो, ओके. मतलब मानसी आप बता सकते हो अगर ऐसे इन नहीं जनरल वॉलेंट्री होता है कि नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है. हाँ नहीं सिटीजन होता है चार्टर है mandatory. वो. वो तो एथिकल वो आपका स्टैंडर्ड अपहोल्ड करने के लिए. हम्म. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द गोवा 60 years आफ्टर लिबरेशन ऑफ गोवा इन 1961. वहां से गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया अलॉन्ग विद दमन एंड दीव इन 1963. उसके बाद 1987 में गोवा बिकेम इंडिया 25th स्टेट.
तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब पूछता है प्रीलिम्स में, तो इसको आप देख सकते हैं। एन इंडियन आर्मी कंडक्टेड ऑपरेशन विजय एंड लिबरेटेड गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज रूल। तो ऑपरेशन विजय था, ये भी एक पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। और अभी ये बात हो रहा है स्वयं पूर्णा गोवा 1 प्रोग्राम, और अभी स्वयं पूर्णा गोवा 2.0 है, अभी चल रहा है, जिसमें देर इज अ टॉक ऑफ promotion of entrepreneurship, use of artificial intelligence, robotic in educational institution, then ई-श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आपका डेटाबेस होता है स्किल लेबर का, आपको जो ग्रीवांसेस है, आपका कुछ कंप्लेन है, और आपको कुछ डायरेक्टली फाइंड आउट करना है क्या क्या जॉब अवेलेबिलिटी है, तो आप डायरेक्टली आ सकते हो पोर्टल के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्री हो सकता है, और ई श्रम पोर्टल से पता चलता है कि कितने लोग रजिस्टर किए हैं और कितने को जॉब लगा है, उससे पता चलता है कि फॉर्मुलेशन इकोनॉमी एक सही डायरेक्शन में चल रही है। तो स्किल डेवलपमेंट, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग बात करते हैं, मानसी भी हमेशा बोलती है इसके बारे में कि स्किल डेफिसिट है जो भी हमारे वर्कर्स में, और जो एकेडमिक का जो पेडागोजिकल जो सिलेबस होता है, इट इज़ नॉट इन कन्फाइनमेंट टू द इंडस्ट्रियल नीड्स। तो उसको दूर करने के लिए एमओयू होना चाहिए, जैसे ही चाइना में होता है, आईटीआई इंडस्ट्री हो गया, उसके साथ साथ जोड़ दे उसको यूनिवर्सिटी के साथ। तो जो भी चेंजेस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में आ जाता है चेंजेस, पुराने जमाने का नहीं रहता है जो सिलेबस रहता है। सो तो अपार्ट मिलेट मिशन, टूरिज्म, हाँ, अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म हाँ, गोवा और कौन से सेक्टर्स में ना स्ट्रांगली इमर्ज हो सकता है? टूरिज्म के अलावा बाकी सब मैं प्रमोट कर सकते हैं, मानसी आप बोलो, क्योंकि ये तो जनरल जैसे एजुकेशन, हाँ, ये ध्यान स्पेसिफिक तो पता। कर लिया। मतलब कि एक तो एजुकेशन हब में इट कैन बी डेवलप्ड, देन हम जैसे बात करते हैं कि सी वाटर राइस कल्टीवेशन एक प्रैक्टिस होती है, उसमें गोवा कैन टेक द लीड, एंड ग्रीन मैरीटाइम प्रैक्टिसेस में भी गोवा कैन आल्सो शो मोर प्रोग्रेस अपार्ट फ्रॉम जो टूरिज्म लेड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है गोवा में। And apart from that, the Goa can also lead in cashew and coconut export under the है, वो तो ऑलरेडी है ना भाई भाई कैशू में। भाई ऐसा है, छोटे दुकानदार और मनी लेंडर की तरह मत बोलो। आपको अगर बोलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ कैश क्रॉप्स, ऐसे करके स्ट्रक्चर तरीके से बोलो। गोवा किस में हो सकता है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका जिसमें मन करे उस चीज में उसको उठा दो। वो मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, गोवा में माइनिंग भी बहुत अच्छी है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी अनदर सेकंड केरला ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा हब। देन इट कैन बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सर्विस सेक्टर। बहुत ही अच्छी प्रिस्टीन लोकेशन है, आइडिया देने में कुछ भी वो नहीं है। सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एलाइड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एंड देन इट हैज गॉट वेरी हाई लिटरेसी रेट एंड नो विलेजेस, मतलब अर्बनाइज्ड है। ऐसा स्टेट है जो कंप्लीटली अर्बनाइज्ड है, तो विलेजेस आर अर्बनाइज्ड। देन इट कैन बी अ रोल मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो। सो सर्टेन थिंग्स कैन बी डन। तो ऐसे करके आपको बोलना है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो ये हो सकता है, वो मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड। बड़े बड़े वर्ड, बड़े बड़ा फ्रेजेस आना चाहिए। मिनिस्ट्री के हिसाब से सोचो। ऐसा क्या कि वहां पर जैसे वहां से भी डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, गोवा में भी देर आर इश्यूज, बट हाउ टू मेक इट ए सस्टेनेबल लैंड, हाउ टू मेक इट वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ इवन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो you all know what you are talking, and all of you are having very good point, but the presentation need to be smart. so Then regarding, we were talking about the collaboration between the government schools or even the university and the industries for the improvement in the skills. So Goa became the first state to launch coding and robotics course. This will help to upskill the citizen and students from 11th standard, 8th standard, 6th standard. And according to the State Council of Educational Research and Training, they have revamped the computer science syllabus. तो बेसिकली अगर बचपन से ही अगर पढ़ाया जाएगा साइंस के हिसाब से, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग, दे विल थिंक अबाउट इट, दे विल इनोवेट एक्सेट्रा, देन देयर वुड बी increase in skilling among the student And the growth earlier in on. STEM तो ये sector part होगा। of NEPB. हाँ, And as already said,
Second group of aspirants must keep on making their own notes, must keep on writing, and they all will be submitting points to Pravesh, and Ashik will be submitting to, Shivang will be submitting to Ashik. Continue, please continue. यस सर। एंड तो इससे क्या फायदा होगा? दो एरियाज है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव मतलब आपस में लर्निंग करना, इनोवेट करना, थिंक करना। फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में अटल टिंकरिंग लैब्स, तो उसके थ्रू भी प्रमोट किया जाएगा। सेकेंडरी बॉटम्स अप ड्रिवन मॉडल वेयर कंप्यूटर टीचर्स आर एम्पावर्ड टू डिसाइड एंड प्लान द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेबस। Then another areas Goa can be useful is global circuit, क्योंकि वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बहुत फेमस है। और हम हमेशा बात करते हैं इम्पोर्टेंट चर्च, तो लेकिन यहाँ पर टेम्पल्स भी है फेमस गोवा के अंदर। तो मंगेशी टेम्पल, महादेव टेम्पल एंड सप्तकोश्वरा टेम्पल इन बिजलो आर द फेमस टेम्पल इन द स्टेट. It is a part of the principality of the Kadamba dynasty in the 12th century. So, Shik, it is a Lord Shiva temple, and the very brief history of this temple is that it was attacked by the rulers of the Delhi Sultanate and then the Portuguese, but still its glory is, across the world for its name and fame. Then we can see that how the political deities of the Kadamba dynasty were hosted in this temple within the premises by the 12th century. इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ओरिजिनल टेम्पल है of the Saptakoteshwar, it was located on the Divar Island. So this is famous as far as the geopolitical location is concerned. And this was built by Kadamba dynasty, which was conquered by Bahmani Sultan, जिन्हें हम अलाउद्दीन हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं. And in Founder of 1367, Bahmani Kingdom. yes, around 1367, King Harihara defeated Hasan Vijayanagar Gangu, Empire. Vijayanagar Empire, and restored the temple. So this is a achievement that how the various political dynasties were known for destruction and others were known for reconstruction of the temples and the recreational facilities across the time. Then the Chhatrapati Shivaji Maharaj is also associated with this temple, who re-established this temple by 1688, and the stone plaque mentioning this order is installed on the entrance gate. So what we can learn from this, that how these temples are actually have seen the various dynasties and their socio-economic policies, and how they were connected majorly by their rules. Even when we talk about the Deep Stamba, so basically this picture, it is showing Deep Stamba, which is unlikely in any other temple in the Goa. So this is a unique item of this temple. And Brahmanical laterite and stone caves are surrounding this temple. So it was existed as a Jain Mutt also. So Saptakoteshwar temple is located 35 kilometers from the Goa capital Panji, and we have a ferry service from the island of Divar also. So this is one of the beautiful example where the Goa state taking lead in boosting the tourism. Then अगर हम बात करते हैं infrastructure की, तो यहाँ पर now we are seeing that how the new airports are being constructed and to boost the tourism in the state. Goa's new Mopa airport we are seeing. तो क्या टारगेट्स हैं? तो 12 मिलियन पैसेंजर पर साल इसमें ट्रैवल कर सकेंगे नेक्स्ट 5 years में, और it will alleviate the passenger experiences under the Udan initiative of the Ministry of Civil Aviation, जिसमें affordable, accessible and cheap rates पर जो आम आदमी है उसको ट्रैवल करने की सुविधा आज के टाइम में भारत सरकार और हमारी कंट्री दे पा रही है. GMR Group is known for providing the international civil aviation facilities. We have various airports under this corporate agency. अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की, गोवा एयरपोर्ट की, मुंबई एयरपोर्ट की, and many others. अटल सेतु की अगर हम बात करते हैं, so we have अटल सेतु in the Goa, that is the third Mandovi bridge, and यहाँ पर cable stayed bridge बनाया जा रहा है in the Goa between the Panaji and Porvorim. It carries a national highway which is 66 meter over the tidal part of the Mandovi River. So Mandovi River, so Prerna can take and detail that what are the tributaries of the Mandovi River, from where it starts, from where it goes, and whether it is a perennial river or it is an antecedent river. So Prerna can take
about this in detail. So now, Ashik, you can take some more topics in this. So what Pravesh has said, the connectivity is the key, and the government is investing in the various project we have just seen, either is a airport or national highways, and even the bridges, Atal Setu, etc. Then we were talking about the Gati Shakti platform. It is a platform where the private sector and the government can collaborate on the infrastructure growth. And for that, Goa is to create a culture map using Gati Shakti platform. Culture map means where are the sectors which can be promoted through use of tourism. And for tourism, infrastructure is important. And for infrastructure, investment is important in railways, roadways, and airways, etc., and even the waterways, for example, ferry service, etc. And in all these sectors, we need more connectivity and integration in coordination. इसलिए गति शक्ति यूज हो रहा है for creation of data map. And one more additional information I would like to add on here, that under the Bharatmala Sagarmala initiative, which currently are focused upon under the Gati Shakti mission, which aims to multimodal connectivity in India, we are trying to become the world's largest, carbon neutrality highway developers, when we are using the bamboos as the barricades and the dividers on the national highways and on the expressways under the Bharatmala Yojana. So this is the initiative of India towards showing that how much ecological sensitive we are even in the development. Yes. And regarding the healthcare, it is important that Ayush, Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, etc., it is being promoted to gain ground. Like we have discussed, the Kerala is setting the high standard, and then Goa will emerge in the as a. Then AIIA, Ayurveda gains recognition globally. All India Institute of Ayurveda is a top tier healthcare service rooted in the Indian traditional healing. It will be established in Goa. Then regarding Gramin Mitra, it will bring governance at the doorstep. लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो स्कीम्स है, जो कैसे इफेक्टिव डिलीवरी हो, उसके लिए Gramin Mitra, who are village level entrepreneur, they are assigned to bring responsibility and bringing the selected government service to the people. They will also use the data, access of the information opportunity for the overall socio-economic well-being of the people. तो ग्रामीण मित्र is an example, इसको लिख सकते हैं. It is said to revolutionize the delivery of public service in Goa. जैसे हम लोग बैंक मित्र बात करते हैं, बैंक सखी का बात करते हैं, पोषण मित्र का बात करते हैं, डिजास्टर सखीज का बात करते हैं, तो आरोग्य सेतु, आरोग्य मित्र का बात करते हैं, वैसे ही ग्रामीण मित्र है उस गोवा में. International trade fair, from white honey to olive wood handicrafts, etc., they are being promoted in the international trade fair, which is being hosted in the G20 complex in Pragati Maidan. So international trade was very important to showcase our culture, our heritage, our traditional art forms to the world, and from various countries, Egypt, etc., Central Asia, etc., the artists come into one place and they exhibit their finding, their products, etc., to the world. और ये helpful करता है people to people contact में. I would like to ask the international trade fair का theme क्या है this year? You can search for it, Karuna, and आप बता सकते हो. Okay. I think Oshik, it is Vasudhaiva Kutumbakam only. Situation like Gaza can polarize the world. Resolving the dispute is the key. Our CDS, Chief of Defense Staff, has said that among the crises ongoing in Gaza, for example, Israel-Palestine crisis or Russia-Ukraine, and even Azerbaijan and Armenian war, resolution of the dispute is very important for it. और बिकॉज ये वॉर सिर्फ और सिर्फ आर्मी के बीच में नहीं,
ये वॉर कभी कभी सिविल वॉर भी हो सकता है और फिर लॉन्ग टर्म रिलीजियस वॉर भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अरब जो इजराइल एंड पैलेस्टाइन, इट इज नॉट ओनली फॉर द पीस ऑफ द लैंड, इट इज पीस ऑफ द हिस्ट्री, और उनका जो रिलीजियस एस्पेक्ट भी है वो भी हम लोग भूल नहीं सकते। And here also, as So, asked by sir before also, कि this can turn out to be a wider conflict. yes. Our Chief Justice of India have said that CGI is not the magician to solve the problem in the country, but there has to be some process to address the judiciary chronic problems. तो इसमें देखना है, प्रवेश, you can take up this one in PS, political science. Okay, I can take a little things from here. That what are the major problems in the judicial, sector? We have the judicial infrastructure हमारा अच्छा नहीं है. Capabilities of judges by the court staff, reducing the court's pendency. These are the targets, and we have to reduce some ill practices which are currently seen when we are seeing the unnecessary adjournment which are done by the judges and given to the lawyers. That leads to, and that is a major cause of concern of the pendency of cases. Then we are also taking some technological steps as judicial clock. We are providing the judicial information, e-tab, e-appeal facilities, grievance redressals, mediation and arbitrations के लिए we are creating the fast track courts. Then we have the family courts, marriage courts for the pecuniary disputes resolution mechanisms. And apart from that, what we are doing is we are trying to increase the capacity of the judges by providing them more technological hand in fast tracking the cases and solving the cases. Then the role of CJ is also one of the major cause of concern among the Indian judiciary, where he's considered as the master of the roster, which some of the judges like Justice Gogoi and other were cited that this is against the judicial equilibrium, but because we have because we have a lineage of British era law in the form of IPC, CRPC, CPC. So currently we are working on the same platforms, but today when we are saying that Nyaya Sanhita, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Sakshi Sanhita, and Bharatiya Suraksha Sanhita, all these kinds of reforms are coming to change the archaic colonial apparatus of the judiciary, and it will definitely gonna remove these ill practices which are currently seen and affecting the judiciary. Okay, Pravesh. Apart from that, what judiciary is doing to address the issue of the case pendency, etc. First is judiciary has established, Supreme Court has established ICT-enabled courtroom with live streaming, live tutoring mechanism in the courtroom of live coverage. And second is MOU with IIT Madras in the use of artificial intelligence emerging technology for the transcription or summarization with transcript and translation. Then SCR, which is a electronic database consisting of 34,000 judgment, which is help student and researcher to read about the precedent set by the judiciary and also the various cases before to come off at the amicable solution. Then internship scheme has been introduced by the National Commission of Scheduled Tribe to provide them internships to the student. Then handbook on the gender stereotype and gender neutral restroom that has been done for the gender inclusivity. Then about the collegium system, Supreme Court has laid down that diversity is one of the factor to consider it. Apart from, it has to maintain the balance of diversity as well as the seniority of all the judges. तो इतने सारे एरियाज है जो जुडिशरी कर रहे हैं रिगार्डिंग द जजमेंट, और इसमें एक्स्ट्रा होगा तो आप प्रवेश बता सकते हैं फिर बाद में।